In the last class, what we were talking about was the the transports, or we were nearly done with the transports, the mechanisms of transport, and we talked about active transport, and uh, we talked about an example of active transport and osmosis. When we were talking about the root hair cell, what we were left with was an example of diffusion. Now, where inside the living organisms do diffusion take place? अगर हम लोग animals के बारे में बात करें, तो in animals the diffusion takes place where? In the alveoli. Alveola is plural for alveolus. अच्छा, alveolus क्या होता है? They are small pockets of air. They're small pockets of air that are present inside where? That are present inside the lungs. ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम लोग एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर देखें, वेरी गुड, अगर हम लोग एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर देखें, सो व्हाट डू वी सी इज दैट, व्हाट डू वी सी इज दैट कि हमारे पास जो एल्वियोलाई होते हैं, दे बेसिकली स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर। ठीक है, और वो दिखते कैसे हैं? दे प्रीटी मच लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। अच्छा, अब ऑन द इनसाइड देयर हॉलो, ये पूरा का पूरा स्पेस क्या है हमारे पास? इट्स एम्प्टी। ऑलराइट, ये पूरा का पूरा स्पेस इट्स एम्प्टी। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? इसके अंदर हमारे पास एयर आता है। नाउ विच टू गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एयर? आर नंबर वन ऑक्सीजन एंड नंबर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। सो विच गैस इज इन अ हायर कंसेंट्रेशन? ऑक्सीजन, वेरी गुड। तुम लोग यहाँ एक एरो डाल देते हैं। So compared to oxygen, carbon dioxide will be in a lower concentration, right? अच्छा, अब होता क्या है, ये अंदर से तो हॉलो है, लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज है ना, दे आर मेड अप ऑफ अ सेल कॉल्ड एज एन एपिथेलियल सेल। अगेन, ये हमें याद नहीं करना, जब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये हमारे पास उसकी बाउंड्री बना रहा होता है ना, वो हमारे पास कौन सा वाला सेल बना रहा होता है? एपिथेलियल सेल बना रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, so let's have a look at these epithelial cells right here। ठीक है, ये कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी बाउंड्री की थिकनेस देखूं, तो मैंने कहा कि द एल्वेओलाई आर ओनली वन सेल थिक। वन सेल थिक का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन है, डोंट वरी। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, so let me just complete this। So on the outs, so they're hollow on the inside, and on the boundaries are only they only have one epithelial cell। ठीक है। अच्छा, what are they surrounded by? What are the alveoli surrounded by? The alveoli are surrounded by blood capillaries। These alveoli, they are surrounded by what? By blood capillaries or blood vessels। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास द ब्लड वेसल that is entering the alveolus, right? So I'm just going to show it to you this way. The blood vessel entering the alveolus, I've drawn it in a blue color. What is this blue color signifying? This blue color is signifying that these blood vessels carry deoxygenated blood. That means that these blood vessels are going to have a higher concentration of carbon dioxide and a lower concentration of oxygen। And obviously, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होंगे, उनके पास कौन से वाले सेल्स होंगे? रेड ब्लड सेल्स होंगे, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो होता क्या है, ना 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 हसन, यू गॉट द ऑपोजिट। इट्स गोइंग टू बी रेड फॉर ऑक्सीजन एंड ब्लू फॉर CO2। ठीक है। अच्छा, एंड फ्रॉम हियर द ब्लड इज लीविंग। अब देखो होता क्या है, व्हाट, देखो समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। दिस रेड ब्लड सेल
which is carrying carbon dioxide, need to give this carbon dioxide into the alveolus of the lungs, and it needs to gain oxygen. लेकिन ये रुक के एक जगह रुक के एक्सचेंज नहीं कर पाएगा. It has to carry out gas exchange while it's traveling in this blood vessel and then moving out. So by the time this blood vessel moves from here all the way towards the other part, it needs to ensure, it needs to ensure that all the carbon or nearly all the carbon dioxide that it has moved into the alveolus or into the air inside the alveolus, and the oxygen that is present in the alveolus would move in. अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ बेसिकली डिफ्यूजन ही हो रहा होगा ना. ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे कैरिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एल्वियोलस के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. So the gas, carbon dioxide gas is going to move from a region of higher concentration, that is the blood, towards the alveolus, towards the region of low concentration. दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? In the blood, there is low concentration of oxygen, but in the air in the alveolus, there's a high concentration of oxygen. So the oxygen gas will start moving from the alveolus into the blood, making this blood oxygenated, right? But the catch is that this process should occur very quickly. This process should occur very quickly. तो ये जो हमारे पास एल्वेओलाई होती हैं, उनकी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं. किस चीज के लिए? फॉर gaseous exchange, for a faster rate of diffusion. अब वो adaptations क्या हैं? We're going to talk about 3 adaptations out of the 4. Fourth वाली हम लोग जब lungs पढ़ेंगे तब देखेंगे. The first adaptation is that they are only 1 cell thick. The second adaptation is that they are surrounded by blood vessels. And the third adaptation is that they are many in number. Before we start off with any of this, एक बात ये समझ लो, what do I mean by the word one cell thick? I know that tissues are made up of cells, right? अब मेरे पास एक टिश्यू है जिसके अंदर ना, so I have this tissue where many cells are overlapping each other. Many cells are overlapping each other. अब मैंने कहा यार, अगर मुझे for example without any units of measurement, I have to find out the thickness of this tissue. तो मैं क्या कहूँगा कि यार ये जो टिश्यू है ना, it's how many cells thick? It's 4 cell thick. Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, और यही चीज बाकी सारी जगह के ऊपर भी आ रही है. तो इसकी जो थिकनेस है वो 4 cell thick है. Comparing this tissue to another tissue where the cells are joined up side by side, right? अब ये जो टिश्यू है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी आ रही है? इट्स ओनली 1 cell thick. तो अब अगर हम लोग एल्वियोलस को देखें तो एल्वियोलस की थिकनेस भी कितनी है? इट्स ओनली 1 cell that's surrounding it, isn't it? Or that's making up the alveolus. That's what we mean by 1 cell thick. कि उसकी जो थिकनेस है ना, वो सिर्फ क्योंकि एक ही सेल से बनी हुई है, so you know what's going to happen? I'm going to call it, I'm going to say that the alveolus is only 1 cell thick. Do we get this, बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आई चिंता? Does anyone have any problem with this concept of, you know, the thickness of the cell or thickness of the alveolus? Okay, all right. चलो, अच्छा अब देखो, अब क्योंकि एल्वेओलस वंस, अब अच्छा मुझे रादर बिफोर वी गो फर्दर मुझे एक बात बताओ. This is particular molecule which is present at point A right here. It has to travel to point B. वो ज्यादा जल्दी कहाँ पहुंचेगा? Is, or rather, in which tissue? The tissue that is 4 cell thick or the tissue that is 1 cell thick?
द सेकेंड वन। क्यों? डिस्टेंस कम है ना। यहाँ इसको पूरे के पूरे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट, इसको पूरे के पूरे सेल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, यहाँ वो शुप एक सेल क्रॉस करेगा। तो इसी तरीके से मेरा बच्चा लोग, जब ये ऑक्सीजन एल्वियोलस से मूव करके सेल में जा रही, वो ब्लड वेसल्स में जा रही है, और CO2 बाहर आ रही है, they only have to cross this one cell thick layer of the alveolus, right? इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, जो मेरे पास डिफ्यूजन का डिस्टेंस है ना, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज, और इट्स लेस। ऑलराइट। दूसरी बात, when the alveoli, मैं इसको समझाऊंगा, don't worry, when the alveoli are surrounded by the blood vessels, this increases the concentration gradient. Those students who were not with us when we talked about diffusion, what do we mean by concentration gradient? Difference in concentration. अब देखो, मेरे पास ये जो ब्लड वेसल है, इसके पास CO2 ज्यादा है, एल्वियोलस में CO2 कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस एक ग्रेडियंट बन गया, एक डिफरेंस बन गया, राइट? डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें, तो एल्वियोलस में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो अगेन एक डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन बन गया। ऑल राइट। तो दैट डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन इज व्हाट वी कॉल एज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, पहली चीज। एंड सिंस there are many number, this increases the surface area to volume ratio for what? Absorption. हमारे पास इतनी एल्वेओलाई होती हैं एक लंग के अंदर, देर सो पैक्ड, वो ओवरलैप कर रही है, इतनी फोल्ड हुई हुई है, कि इफ आई एम गोइंग टू टेक आउट अ ह्यूमन लंग एंड स्ट्रेटन इट आउट, सो द होल लंग और द होल alveoli would cover an area approximately near to a tennis court. तो पूरा एक टेनिस कोर्ट का एक एरिया कवर हो जाएगा। इतना बड़ा लंग है हमारा, ये इतनी ज्यादा एल्वियोलाई है, और उनको हम लोगों ने इतना फोल्ड करा हुआ है, इतना फोल्ड करा हुआ है, इतना फोल्ड करा हुआ है, ठीक है, कि वो एक लंग केस में आ रहे हैं, हमारे चेस्ट में फिट हो रहे हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ, सो व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस? अब रिमेंबर दिस, देखो, सिंस वन सेल थे तो डिस्टेंस कम हो गया, सराउंडेड ब्लड वेसल तो ग्रेडियंट बढ़ गया, एंड सिंस मेनी नंबर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, वो भी बढ़ गया। नाउ इफ यू वुड गो बैक टू अ डिफ्यूजन, and if you would talk about the factors affecting the rate of diffusion, जितना डिस्टेंस कम होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, या फिर ऑपोजिट, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। लेकिन एल्वियोलस में तो डिस्टेंस कम है ना, बिकॉज इट्स ओनली वन सेल तक, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया? बढ़ जाएगा। देर इज अ हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट? सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो हाई। द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज ऑल्सो हाई, सो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। Do we all understand this? Right? Does anyone have any questions? Okay. So we're done with this topic.